a level of universal, from the perspective of spirituality. In all sense, the responsibility lies. But however, I would speak in principle about the responsibility from this particular beautiful section of Chaitanya Charitamrita, where Lord Chaitanya Mahaprabhu is instructing. So there are some ladies here who will understand little Hindi and English. So मैं थोड़ा हिंदी में भी बोलता हूँ. But they're so taking responsibility. Chaitanya Mahaprabhu gave instructions to Sanatan Goswami. ये 2 महीना तक श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया. कहाँ पे? वाराणसी. In Varanasi he has given. So I had a fortune to go to Varanasi 3 months back. It was very, very beautiful place. And in that particular specific place, Mahaprabhu used to give instructions to Sanatan Goswami. In Prayagraj, which is just a 2-hour ride from Varanasi, there Mahaprabhu gave instructions to whom? Rupa Goswami. For how many days? 10 days. And Sanatan Goswami, how many days he gave? 2 months. Okay. 2 months Mahaprabhu ne Chaitanya Sanatan Goswami. Based on that, Sanatan Goswami has further written books. And Rupa Goswami has written books. Based on that instruction which they received. तो यहाँ पे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कृष्ण भक्ति की जो लक्षण के बारे में कहते हुए कुछ बताते. So we are in Chaitanya Charitamrita, 22nd chapter, 56 verse. Okay. कृष्ण कृपालु अर्जुनेर लक्ष्य कोरिया जगतेरा रखिया छे उपदेश दिया. Krishna is so merciful that simply by aiming his instructions to Arjuna, he has given protection to the whole world. Jagatera Rakhiya chhe. Krishna, just by giving instructions to one Arjuna, he protected the whole world. So, you see, Krishna is instilling that faith in the heart of Arjuna, one Arjuna. And this particular procedure, जिस प्रकार भगवान ने उनके हृदय में, अर्जुन के हृदय में तो विश्वास को जागृत किया जो लुप्त हो गया था. क्योंकि अर्जुन कंफ्यूज थे ये सब देख के कुरुक्षेत्र में, अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है. उन्होंने हम बताया 5 कारण देते हैं जिसको आई डोंट वांट टू फाइट, कंपैशन, हाउ कैन आई किल, हाउ विल आई एंजॉय एंजॉयमेंट. इस प्रकार की चीजें देते हो. क्या वो अपना जो विश्वास है भगवान के प्रति और धर्म के प्रति वो लुप्त हो गया. So what Krishna did, he instilled a faith in such a way that it not only protected Arjuna, but it also Jagatera Raki Achen Upadesha Diya. So we see that how Krishna is very responsibly acting there, not only protecting Arjuna's faith, and through Arjuna is protecting entire world's faith. The first principle in responsibility is taking responsibilities, protecting one's own faith. हमारे खुद की विश्वास को बचाना वो बहुत important responsibility. ये मत सोचे कि दुनिया को उद्धार करने के चक्कर में अर्जुना क्या कि अपने विश्वास को ही वो बैठेंगे अपना हिसाब से. तो जब तक उनकी भगवान की शिक्षा सुने नहीं, उनको अपने विश्वास को बचा के नहीं रख पाया, वो पहले जिम्मेदारी होती. And then come the next verse, next 2 verses. Chaitanya Charitamrita, where Chaitanya Mahaprabhu is quoting his own instructions in Bhagavad Gita.
कृष्णा's instructions भगवद गीता सर्वभूयतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैष्य सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु भगवद गीता कोट करते हैं। बस अभी सनातन में सुन रहे ठीक है, आपका आपके विचार है महाप्रभु, मेरे को कुछ शास्त्र का रेफरेंस तो दो। ठीक, जब भी हम लोग कुछ कहते हैं ना, certainly we should speak our realizations, but the realization should be referred to some scriptural references. Realizations versus references should always be a part of our instilling faith. अभी आप बोलने से थोड़ी विश्वास करेंगे लोग, बट हाँ, आपके साक्षात्कार इतना महत्व है महाप्रभु जैसे कोई शब्द भक्त की, आप सुनने से विश्वास आ जाएगा। हाँ, क्योंकि वो के साथ जी रहे, साक्षात्कारों के साथ वो जी रहे, लिविंग विद है। परंतु महाप्रभु क्या करते हैं, भगवद गीता का कोट करते हैं, ये दो वर्स, दिस इज बेसिकली 18.64 and 65, and especially this verse 65 verse 18.65 is called the you can say the essence of Bhagavad Gita. The conclusion is सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये वर्स कंक्लूजन है। परंतु भगवद गीता की जो शिक्षाओं में सबसे एसेंस है ये वर्स, ये वर्स दो बार रिपीट होते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाम दीनाम नमस्कुरु, ये वर्स दो बार आते हैं, एक 9th चैप्टर में आता है, फिर एक हियर इन 18th। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज दैट? ही सेज बिकॉज़ यू आर माय डियर फ्रेंड, I am speaking to you my supreme instruction and the most confidential of all. Hear this from me, for this is for your benefit. What is that? Manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mameveshyasya satyam te pratijani priyosi me। अर्जुन और दुर्योधन भाई रूप में देखेंगे, फ्रॉम ए मटेरियल ऑब्जर्वेशन पर्सपेक्टिव बोथ आर फाइटिंग, बोथ आर स्किलफुल, both are organized parties, teams to fight against, but there is a lot of difference in their purpose for which they are doing. One is intended to please Krishna and second one is intended to satisfy his own ego and selfishness. दुर्योधन अपना स्वार्थ के लिए वो लड़ रहे हैं। कभी वो स्वार्थ का अलग अलग रूप दिया उन्होंने उसका एक रूप दिया था कर्ण के प्रति फ्रेंडशिप, कभी अपने भाइयों के प्रति अफेक्शन, इस प्रकार अलग अलग रूप दिया उन्होंने। कभी द्रोणाचार्य के प्रति मर्यादा, भीष्म को फॉलो करने की नम्रता, इस प्रकार के उन्होंने अलग अलग भावना दिया है, अपने स्वार्थ का रूप दिया अपना स्वार्थ का। अर्जुना he intended to please Krishna and everyone, but problem is that उन्होंने प्रायोरिटी में रखा नहीं भगवान को प्रसन्न करने का, उसको साइड में रख के सबको प्रसन्न करने का सोचे, उसमें कंफ्यूज हो गए। तो कृष्णा's instruction was मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु प्रतिजानी प्रियोऽसि मे। The intention to please Krishna is very very important. How will you protect your faith? Yes, I sustain my faith by doing activities that are meant to please Krishna with an intention to please Krishna. बहुत बार क्या करते हैं हम कार्य करते हैं जो कृष्ण भक्ति के हिसाब से, कृष्ण के हिसाब से सेवा के लिए क्या बोलते हैं इसको, फेवरेबल, प्रतिकूल, अनुकूल, प्रतिकूल इज अपोजिट, अनुकूल, जो भक्ति के अनुकूल के हिसाब से कार्य करते हैं, परंतु उसमें भगवान को प्रसन्न करने का जो भावना है कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। What a devotee thinks,
एक भक्त बड़ा होने के बाद क्या सोचते हैं, तो जो मैं बहुत छोटा हूँ, इस सोचने से उससे तो नहीं होता है, कार्य भी ऐसा होना चाहिए। मैं छोटा हूँ, कोई मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं छोटा हूँ ना, नहीं हो पाए तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के एस्पेक्ट नहीं होने चाहिए। You have to take responsibility of protecting your faith. That is the first responsibility. And second is taking responsibility of acting in a way that pleases Krishna with an intention to please Krishna. दोनों चाहिए। ये नहीं कि ना मैं सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, बट जो मैं जानता हूँ कैसे प्रसन्न करना है उनको, मैं उसके हिसाब से करता हूँ। इसको प्रेम करता है तो उसको क्या चाहिए उस हिसाब से आपको चलना चाहिए ना। ये नहीं कि मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मेरे को लग रहा है ये ठीक है, अनुकूल है मेरे हिसाब से, ये प्रतिकूल है, नहीं करूंगा। तो सर्विस, हाँ प्रभु मैं ये सर्विस में बढ़िया कर दिया, ये सर्विस मेरे लिए नहीं अच्छा नहीं है। सो मेनी टाइम्स वी प्रायोरिटाइज what we think favorable to us during devotional service. But before you prioritize the point of pleasing, the intention of pleasing Krishna. पूरा इंस्ट्रक्शंस भगवान ने दिया है इसी बात को लेके, प्लीज मेक मी a priority of your life, make pleasing me as a priority, make the intention to please me as the priority of your life. Intention, the intention should be very strong. प्रभु बोले प्रभु जी ये तो इंटेंशन नहीं आते हैं, इसलिए the third principle which comes, that is associating with those who have that escape path. We'll go to the next verse. पूर्व आज्ञा वेद धर्म कर्म योग ज्ञान, पूर्व आज्ञा वेद धर्म कर्म योग ज्ञान, सब शादि शेष यही आज्ञा बलवान, सर्व साधि शेष यही आज्ञा बलवान। This is 59th verse. Huh? No, 58th verse, 59. Although Krishna previously explained the proficiency of executing Vedic rituals, performing fruity activities as Janaveda, practicing yoga, cultivating jnana, the last instructions are more powerful and stand above all others. भगवान ने पहले दिया कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, ज्ञान योग, बट ये जो 18 अध्याय में जो लास्ट वर्सेस है, 55 वर्स है, ये सबसे important standing instruction. You heard this word, standing instruction. The word standing, a very जैसे मान लीजिए बहुत प्रजा है, बहुत लोग, उसमें लीडर एक होता है, ऐसा बहुत इंस्ट्रक्शन है वेदों का, उसकी जो लीडर है कौन है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण and never forget Krishna. The golden rules, you know, the two golden rules of Bhagavad. But that remembering Krishna is with an intention to please Krishna. तो जी मैं भगवान को स्मरण, मेरे को कीर्तन सुनने में बहुत अच्छा है, स्पेशली वो कीर्तन जिसमें राग ऐसा होता है, इसमें मेरे भगवान की याद बहुत होता है। बट उसमें क्या भगवान को प्रसन्न करने का भावना है? होगा तो आप भक्ति सिद्धांत ठाकुर जैसे जो जिन्होंने शरीर जब इस दुनिया से अप्रकट होने के समय उन्होंने एक डिवोटी को बताया तुम साइड आ जाओ, ये डिवोटी का गीत सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी भावना बहुत अच्छा है, ताकि उनके राग ठीक नहीं है पर उनकी भावना अच्छा है। एंड ये स्टोरी कौन कहते हैं? जो भक्त ने रिजेक्ट करवाया गुरु लास्ट मोमेंट में लाइफ की, वो ये बहुत अच्छा गाते, वो गा रहे थे श्री रूपा मंजरी पद से मोरा संपदा, ये जो गाना है वो भक्त बहुत सुंदर गा रहे थे, बट गुरु ने क्या अंतिम समय पे उनको रिजेक्ट कर दिया से सुनना चाहिए। वो भक्त घरों से कह रहे हैं, क्योंकि मेरा गुरु की जो भावना को समझ गया, he gives attention to the intentions before giving attention to details.
Yes, love is about details. प्रेम का मतलब डिटेल्स में हम जा रहे हैं, बट इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा, दैट इज व्हाट इज स्टैंडिंग अबव ऑल अदर इंस्ट्रक्शंस। मन मना भव मन, ये कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। सो देयरफॉर द सेकंड प्रिंसिपल अबाउट taking responsibility of acting in a way to please Krishna with an intention to please Krishna, very important. This is the second responsibility. First responsibility is protecting our faith. फिर तीसरा अभी आएगा, जैसे में एसोसिएशन हुआ, ये आज्ञा बले भक्तेर श्रद्धा यदि होय, ये आज्ञा भले भक्तेर श्रद्धा यदि होय, सर्व कर्म त्याग करी से कृष्ण बजाय। If the devotee has faith in the strength of this order, with that order, man mana bhava mad bhakta madhyamyam mishta, मतलब doing an activities to please Krishna with the intention to please Krishna, then what happens? He worships Lord Krishna and gives up all other activities. Many times we are confused about taking responsibility because बताइए क्यों कोई रेस्पॉन्स लेने के लिए हिचकिचाता है? Faith, मान लीजिए आप you protected faith, you know that. Messing up. We think we have so many responsibilities. I have to manage this, I have to manage that, वो भी का। बहुत बार हम इसकी से हिचकिचाते हैं। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। भक्त को बोले शादी करने के लिए, मान लीजिए हम मेरा प्रिंसिपल है जो मैं मेरे काउंसलर्स को कहता हूँ 25 के अंदर शादी करो, नहीं तो मत करो। लेकिन शादी कर लिया तो मैं बोलता हूँ 2 साल के अंदर बच्चा पैदा है, कैसे करेंगे? ये तपस्या है। व्हाट इज तपस्या? टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। कुछ मेरे को दिखता नहीं, बट हम क्या यूट्यूब है, मोबाइल है, तो कुछ कुछ मैंने कुछ ना एक मूवी का सॉन्ग है, मेरे को आई डोंट नो द हिंदी का एस्पेक्ट था, उसमें द हीरो बोलता है हीरोइन को, तुम्हारे लिए मैं क्या करूंगा, मैं आकाश से तारों को तोड़ के लेके आके तुमको दूंगा। तो याद है ना सॉन्ग? या फिर पुराने में हमारे टाइम पे जो मैं सुना था उसमें जैसे कि जब वो लड़का लड़की की आंखों में देखते तो उनके चांद दिखता है, तारा दिखता है। जनरली मेनी टाइम्स सबका एक विचार होता है कि जब लाइफ में कुछ करना है तो उसमें कुछ आनंद का चीज हो, कुछ मजा का चीज होना चाहिए जब भी करेंगे। शादी करते, शादी करने के बाद वही आंखों में जो तारा दिख रहे थे, अभी क्या दिखेगा? आग दिखेगा। गुस्सा की आग या फिर फ्रस्ट्रेशन की आग, है ना? या फिर है ना, वो देख नहीं पाते, नजर नजर मिला नहीं पाते। पहले नजर नजर मिलाने के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत इंतजार करते हैं, अभी नजर मिलाने के लिए डरते हैं। तो मेनी टाइम्स they romanticize the material responsibilities. Understand? Romanticize, I don't know whether it's proper word or not, but मैं just wording कर रहा हूँ। तो romanticize and material responsibility, then they think we can take responsibility, but it's not like that. Responsibility means taking that tapasya. Yes, take the responsibility. इसमें परम पूज्य राधान महाराज खुद के जीवन में अपनी कहानी कहते हैं, मदर फादर के बीच में है। कहते हैं कि जब मैं 8 साल के थे उस समय मेरे मदर फादर की झगड़ा हो गया और वो लोग डिसाइड किया डाइवर्स। तो ये बात उन्होंने सुन लिया, तीनों बच्चे ने सुना, देयर 3 सन्स ऑफ देयर फ्रेंड। सुना तो महाराज जाके फुट फुट के रो रहे थे बेड में जाके, कि माँ के बुलाए तो देखा नहीं, माँ को रो रहे थे, क्योंकि वो नहीं दुख देना चाहते कि आई डोंट वांट टू शो माय क्राइंग फेस सो दैट यू विल बी डिस्प्लेस्ड। तो बहुत मदर फादर समझ गया, अरे हमारे झगड़े वजह से बेचारे बच्चे रो रहे। So then they decided we will never get apart.
You'll never get apart. अरे ये बच्चे इतना कष्ट दुख हो रहे हैं, हम अपना अपना सुख देख रहे हैं, मेरा क्या अच्छा रहेगा, मेरे को क्या कंफर्टेबल रहेगा. They were trying, one say you can say people are trying to romanticize their relationship, but romanticize is not important. Relationship responsibility is important. बच्चे हैं तो उन्होंने डिसाइड किया and 58 years they stayed together. And that time, over years, their love, their moon and star, they could see their relationship. It's not in the beginning the moon and star will be there. It's more a tapasya. So, so we are confused बहुत बार responsibility लेने के लिए कृष्ण भक्ति की शक्ति की. We wanted to, we think there are many responsibilities and I have to figure out how to give time to all of them. But हम देखेंगे कैसे करेंगे क्या रे, ये आज्ञा भले भक्ते अरे श्रद्धा हरि होय, है ना, ये आज्ञा. Let me do everything for Krishna with the intention to please Krishna. Then what happens? सर्व कर्म त्यागी करी से ही कृष्ण बजाय. वो भक्त क्या करेगा, हर चीज छोड़ के सिर्फ कृष्ण भक्ति करते हैं. मतलब क्या है? He will not give up his other responsibilities. He will transform the way he's taken his responsibilities. He's transformed his attitude or the consciousness with which he has taken the responsibility. फिर सब एक ही लूप में आ जाते हैं ना. मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं अभी शादी करना चाहता हूँ या फिर मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ, ये सब डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सबको कैसे देखते हैं? कृष्ण भक्ति के हिसाब से देखते हैं. हाँ, तो वो भक्त क्या कहते हैं? सर्व कर्म त्यागी करे से ही कृष्ण बुझाए. सनातन गोस्वामी का पोजीशन देखिए. हाँ, ऐसा पोजीशन पाने के लिए हम लोग ना मरते हैं, जी के मर जाते हैं. हाँ, ऐसा बड़ा पोजीशन था, इन्फ्लुएंसर था. I can say is a social influencer. सनातन गोस्वामी सिर्फ सोशल नहीं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर था. उनकी इंस्ट्रक्शन, उनकी जो गाइडेंस के हिसाब से वो कौन है, नवाब हुसैन इज टू टेक एक्शंस. उनके पास बहुत पैसा, प्रॉपर्टी, कार घर बहुत था. वो मोटेज नहीं था, ये नहीं कि मैंने ना लोन में लेके रखा, ये मैं भरना पड़ रहा है, नहीं. अपना खुद का है वो चीज. इतना कुछ होने के बावजूद भी वो क्या करना चाहते थे? छोड़ना चाहते थे. क्या? Why? He was fed up with it? No. He was frustrated. He felt boring? No. He was got absorbed in Krishna's service. ये दुनिया में बहुत बड़े बड़े लीडर्स ना जेल के पीछे जाते हैं. कारण क्या है? कुछ घोटाला किया, एक स्त्री के लेके घोटाला किया और मनी के लेके घोटाला किया, अपने नाम के ऊपर में घोटाला किया होगा ना. बस यहाँ सनातन गोस्वामी जेल के पीछे क्यों गया? क्यों छोड़ना चाहते? Just because you want to give up this thing. People could not relate. He is actually not giving up. He is highlighting Krishna's service prominently. In the process, some things he felt not required, so he kept it aside. See, you don't give up responsibility unless you take a higher responsibility. जब तक एक higher responsibility नहीं लेंगे ना, giving up responsibility is just a mere of your frustrations or aversions of that particular activity or responsibility. So we should learn to take responsibilities in a activities which pleases Krishna and favorable to Krishna. तो इस प्रकार की जो भावना से हम लोग जब भक्ति की एस्पेक्ट को स्वीकार करेंगे, so protecting faith is very important. In while protecting faith, we should always do activities that pleases Krishna, with the intention to please Krishna. And when you highlight them, prioritize them, क्या होगा? उसके बाद naturally आपके responsibilities align हो जाता है. Align मतलब कुछ छूट जाते हैं, कुछ properly कृष्ण भक्ति के हिसाब से align हो जाते हैं. Unwanted things will go away. Your confusion of whether to take responsibility or not responsibility, it all depends on how much you're responsible in devotional activities, especially those activities which will increase love for Krishna. सनातन उसमें क्या करते थे? हाँ, अपना जॉब करते थे, परंतु उन्होंने स्पेसिफिकली अपने राम के लिए में अपना एक अड्डा बनाया. क्या अड्डा था? एक वॉइस सेंटर और यूथ सेंटर भक्त रक्षक तो बनाया उन्होंने. गुप्त वृंदावन बनाया, जहाँ पे उन्होंने
भक्त के संग में अपने श्रद्धा को बढ़ाते थे. See, I did not plan to become brahmachari. I was just practicing devotion. I did not plan to take saffron. It came as a part of it. वैसा रहेगा तो आगे बढ़ेंगे. बहुत प्लानिंग, कोई मैं प्लान कर रहा हूँ शादी ना 4 साल के बाद देखता हूँ कोई शादी करने का है. I am speaking in general. I am not speaking as a brahmachari aspect, but don't plan so much. Go in with life. If at all, if somebody comes and the parents come or somebody says, okay, go ahead. Please go ahead. Because for you, remembering Krishna is always come. If you get into a plan making, then basically you are expressing your that I don't Krishna, you do your business, I do my business. Basically ये कर रहा है. अब अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ. Go ahead. Have you planned to come in devotional service? आपने कोई प्लान किया क्या मेरे को भक्ति में आके शुद्ध भक्त बनना है? क्या यार, गुरु कृष्ण, हाँ, प्रसाद पे भक्ति लता भी कि प्रसाद के हिसाब से आपकी भक्ति लता आया तो गुरु होगा. तो वही एस्पेक्ट आपको क्यों विश्वास नहीं होते दूसरा चीज में? आगे बढ़ो, जो आ रहे उसको स्वीकार करो. लगता है कि भक्ति के साथ हाउ यू डिसाइड व्हिच वन टू एक्सेप्ट दिस. ओके, दिस इज फेवरेबल, मैं कृष्णा भक्ति कर रही हूं. बट बहुत बार वो भी हम कैसे सोचते हैं फेवरेबल मतलब मेरे को अच्छा लगना चाहिए, उसमें हम फंस जाते हैं. देयरफॉर आई एम टेलिंग दैट प्लीजिंग कृष्णा एंड इंटेंशन टू प्लीज कृष्णा हैज टू बी प्रायोरिटी. तो ये कैसे करेंगे? दैट हैपेंस इन एसोसिएशन. वी विल सी दैट नेक्स्ट 61th वर्स. ओके, तावत् कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत यातवा मत्कदा श्रवणादुवा श्रद्धा यावान्ये जायते न जायते. तो ये महाप्रभु ने भागवतम के रेफरेंस दे रहे हैं. हाँ, 11th canto 28th chapter में भी बेसिकली ये 24 गुरुस का उसमें वो एक रेफरेंस दे रहे हैं. किसके लिए रेफरेंस दे रहे हैं? कि श्रद्धा क्या होना चाहिए? भगवान की कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है. मतलब सब कुछ हो जाएगा मतलब क्या है? जो फेवरेबल आपके पास आ जाएगा वो चीज, उसको करते चलना बस. वो मैं क्लास में हम अब आएंगे ना 8 बजे. हाँ 8 बजे आ जाएंगे तो अच्छा है. 10 बजे. So he says, reference, as long as one is satiated by fruity activity and does not awaken the state for devotional service by Shravanam, Kirtanam, Vishnu, one has to act according to the regulative principles of Vedic injunctions. तो मतलब क्या है? कोई इस प्रकार की श्रद्धा बढ़ाए नहीं श्रवणम कीर्तन के माध्यम से बढ़ते, क्या होगा? तो इस दुनिया के वैदिक इंस्ट्रक्शन में पड़े रहेगा. So he will be only saturated with fruit activity. So next verse. श्रद्धा सबे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय. Very important definition which Mahaprabhu gives of Shraddha. श्रद्धा सबे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय. कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत होय. Mahaprabhu is very systematically bringing faith. Faith is what? Just by Krishna Bhakti, everything is achieved. Shraddha is confident, firm faith that by rendering devotional service to Krishna, one automatically performs all subsidiary activities. Such faith is favorable to the discharge of devotional service. So Prabhupada gives very nice. Firm faith and confidence are called Shraddha. When one engages in Lord devotional service, he is to be understood to have performed all his responsibilities in return. That means what? He doesn't give up responsibilities. Whatever comes on the way, he will take it and go ahead with a clarity that it is favorable to Krishna. He will see that it is favorable to Krishna.
If he finds it difficult, that is not favorable, then he may keep it aside. He may not give attention to it. He may be indifferent to it. तभी कहते हैं भक्त लोग शादी करते लगता है कि ये शादी के बाद मेरा भक्ति जिस करके ऊपर जाएगा, है ना, मतलब बढ़ूंगा, बट एक्चुअली शादी करने के बाद भक्ति उड़ गया उनका, मालिक भक्ति शुरू हो गया। भक्ति के साथ वो भी उड़ना चाहिए, बट भक्ति उड़ गया, वो आ गया, वो भी बढ़ गया, तो वो क्या करेगा? What he should do? He should not give up the marriage. Responsibility is what? He will be indifferent to it. Just continue the aspect and try to keep his bhakti. He'll bring back the bhakti as possible. Why the situation happened? He will not lament on this. Because his lamentation is not about why the marriage. Lamentation is about why I am not able to maintain bhakti. He focus on maintaining bhakti. He may be indifferent to that situation. बहुत बार हम कभी ब्रह्मचारी बन के ऐसा करूंगा, वैसा जीऊंगा, वैसा करूंगा, ऐसा का प्लानिंग करेंगे। जैसे घुसने के बाद, हाँ, अभी आपको नहीं पता चलेगा, घुसने के बाद हमको पता चलता है कि बहुत अलग होता है। जैसे मैं सोच के आया, जैसे सबको, और उस समय क्या फ्रस्ट्रेट हो गया है, निकल जाएंगे, बाहर जाएंगे, क्या भक्ति नहीं कर पाते। लिव विथ इट, लर्न टू लिव विथ योर challenges in life. Don't try to run away in the name of taking what you call, becoming very responsible in bhakti. Bhakti responsibility doesn't mean you give up. You add Krishna in that. But that requires clarity, firm faith, and confidence are called Shraddha. Okay? He has fulfilled all the responsibilities. If you become very serious in bhakti, it's possible. And you do certain activities which will make it. And then Prabhupada said, he has satisfied four fathers, ordinary living entities, demigod, and is free from all responsibility. Such a person does not need to meet his responsibilities separately. It is automatically done. Spiritual activity is meant to satisfy the senses of the conditioned soul. However, when one awakens to Krishna consciousness, he does not have to work separately for pious activity. Then when you don't have to parallelly plan something else. Bhakti करने का planning में ही ये सब आगे बढ़ता है। भक्ति विनोद ठाकुर जीवन में देखिए कितना कष्ट था उनका, बचपन से उनका तबियत खराब था, बहुत कुछ चैलेंजेस फेस किया है। His life was not bed of roses. Pure devotee life is never a bed of roses. It was always a challenge and difficulties. But what they did not run away. They just endured it. बोलते हैं ना, endure का मतलब go on, tolerating it. But why they could go on? Because their focus is different. Their priority is different. Their priority is to please Krishna, not to get pleased. इस प्रकार की श्रद्धा को, so next verse, यथा तरोर्मूल नितिस्तेन तृप्यन्ति तत् स्कन्द भुजोपशाखा प्राणोपहारच्च इन्द्रियाणां तथैव सर्वाहारमच्युतेज्य. Again, this one Bhagavatam, Mahaprabhu quote करते. By pouring water on the root of the tree, one automatically satisfies the trunk. Similarly, by supplying food to the stomach, one nourishes. Same way, worship Krishna running to service, one automatically satisfies not like before. So we should take first responsibility to protect our faith. And the second responsibility to prioritize and do activities to please Krishna with an intention to please Krishna. And Mahaprabhu यहाँ पे इसके ऊपर में कहते श्रद्धा, श्रद्धा को क्लैरिटी के साथ आपको स्वीकार करना है, और ये श्रद्धा आपको आएगा आपके जीवन में when you take the right association. You know many verses, just by taking the dust of the lotus feet of the Vaishnavas, and pure devotees especially, Pada Rajobhishekam, that by bathing in the dust of the pure devotee. What does it mean dust of the? Not that the pure devotee जा रहे हैं उनके नीचे में जो मिट्टी को निकाल के आपने, ये भी important है. But what is the dust of the lotus feet of pure devotee means? Their instructions, their realizations, their faith. Rasham always says, क्या बोलते हैं? अरे आपको श्रद्धा बढ़ाने क्या करना है? Associate with those who are the श्रद्धा. आप कंफ्यूज होना चाहते लाइफ में, associate with those who are confused.
आप बहुत सीरियस बनना है, those are serious in chanting. आपकी hearing reading अच्छा करना है, those who do hearing reading अच्छा. So association, this is the third responsibility. Take responsibility of choosing your association. एक बार अनाथ महाराज अपने एक फ्रेंड को मिलने गया था, श्याम सुंदर को. Prabhupada had three Grihastha disciples. He is very very courageous, adventurous. तो जैसे महाराज उनसे मिले कि रघुनाथ स्वामी चलो हम जाएंगे करके एडवेंचर टूर में 2 बैग लेके चला गया, उसमें कुछ प्रसाद रख के निकल गया. बोले कहाँ जा रहे हैं? चलो. महाराज ऑलरेडी एडवेंचरस in his life, and now adding to it, he took him on a car and went miles, and it took around more than a day. They reached a particular spot and it's written, enter into wilderness. Wilderness you जानते हैं? Wilderness मतलब जो फॉरेस्ट जहाँ पे कोई ह्यूमन का एंटर अभी तक नहीं हुआ, कोई मशीन का एंट्री नहीं हुआ, अभी तक फ्रॉम द डॉन ऑफ हिस्ट्री. मतलब वहाँ की जो पेड़ है कोई 9 साल के पुराना है, कोई 1000 साल के पुराना है, वो विल्डरनेस. उसमें कार छोड़ दे because they are not allowed to enter in the car, so no machine allowed inside. तो वो लोग जाके he was showing all the trees and things. He saw the type of connection that trees are made with the nature around and the earth, so strong. तो महाराज कहते हैं कि our faith is like that. If you take responsibility of choosing a right association, your faith will become like that, secured, with no any other conceptions coming inside. आप लाइफ में देखिए, आप बहुत कुछ देखे हैं, बहुत ही दुनिया में. कल एक में परिवार को मिले थे, वो लोग डर रहे, मेरे बच्चे अभी बाहर स्कूल में जा रहे, स्कूल में बहुत कुछ सीखते हैं, और जो अच्छा चीज भी सीखते हैं और उससे ज्यादा बुरा चीज देखते हैं, देख के सीखते हैं फ्रेंड से, सबसे. कैसे बचाने? मैं बोला नो, लेट देम go through it, let them get be confused and let them come to you and let you explain. दुनिया में जब छोड़ेंगे तो नेचुरली होगा. तो वो लोग है, वो सब बोल रहे, तो उससे आपको उनको प्रोटेक्ट करना है, तो एजुकेट करना इम्पोर्टेंट. वो क्या सही है क्या गलत है, तो दोनों में डिफरेंस समझाना चाहिए. तो जैसे आपने जाके मैं छोटे कमरा में बंद करके रखूंगा, किसी का संग नहीं दूंगा, मैं शुद्ध भक्ति दूंगा, होगा? बाद में बाहर जाएंगे तो सब देखेंगे. सो वी शुड फर्स्ट इंटरनली स्ट्रेंथन आवर फेथ. एक्सटर्नल सिचुएशंस को अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ चूजिंग ए राइट एसोसिएशन. देन व्हाट हैपेंस, आप उस विल्डरनेस में जो पेड़ जैसे बनेंगे. परंतु महाराज ने और एक ऐड किया, उसमें वो जो पेड़ 1000 साल बना, उसको इतना स्ट्रेंथ मजबूर करने, उसको काटने के लिए कितना समय लगेगा? 5 मिनट. So this is where many of our devotees do confused. बहुत बार भक्त क्या करते हैं, श्रद्धा को बढ़ाते हैं, समझते हैं हाँ सही संग में होना चाहिए, प्रभुपाद की किताब अच्छा पढ़ना चाहिए, जब सही से करना है, हाँ दुस्संग नहीं करना है. बट एक समय को लगता है हम सब हो गया, अभी हम बहुत स्ट्रांग हो गया, अभी मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा लाइफ के साथ, थोड़ा बाहर के एसोसिएशन लेंगे. अभी तक सुना है ना, अभी सुनेगा, शायद कुछ है बाहर. एक्चुअली थिंक लाइक शायद हमको कुछ मिस करवाया प्रभुपाद जी ने, जो अनुभव करना चाहिए. या फिर कभी कभी वो चीज एक भक्त के रूप में भी आ सकते हैं, जो खुद भक्ति को प्रायोरिटी में नहीं रख रहे, वो अलग अलग विचार रखे हो, क्रिटिसिज्म और रूमर्स फैलाते हैं. उनके संग में आएंगे, उनकी जैसे लोग के संग में आएंगे, सब संग में क्या होगा, ये श्रद्धा जो बढ़ के रहेगा, पट पट करके निकल जाते हैं. Therefore,
It's our responsibility to choose an association where you can protect and nourish your faith. Very important. See, श्रद्धा बहुत बेसिक फाउंडेशन है आपकी भक्ति का, है ना? लाइफ का भी ना श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट, पर उस श्रद्धा को बचाना आपकी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी. Therefore, how you have to protect it? By taking the responsibility. Seek out an association where you are serving in a positive spirit, where people are serving Krishna in a right spirit. So, Mahaprabhu is very happy seeing Sanatana Goswami, Rupa Goswami. क्या कष्ट ले रहे, किसके लिए? ऐसा एसोसिएशन बना के रख अपना श्रद्धा को बचा रहे. क्या करते? See, it's not that from day one the leader is acting like a leader. The leader is trying to be a real good follower. It's only time and situation ना उनको उस तरफ की मैनिफेस्टेशन में लेके आते. दुनिया को बचाना बात की बात है, पहले खुद को बचा कर रखने जिम्मेदारी. खुद की भक्ति को बचाना मतलब you have to ensure a good association. A good association where we can do something very strongly. और उस एसोसिएशन में रह के हमको you have to take the next responsibility. What is that? To live, to practice, and to act, to think, to speak in a way that will instill faith in others. ये fourth responsibility, fourth level of responsibility. क्या हम ऐसा व्यवहार करें, ऐसा सोच रखिए. उस भक्त संघ, आपने भक्त संघ चूज किया, पर उस संघ में आपको यदि कोई संघ में आ गया, अभी मेरे जो गंदगी है वो सब निकालूंगा भक्त के साथ, होगा? अरे ये तो शुद्ध भक्त है, तो मेरे को प्यूरिफाई करेंगे, तो मैं अपना जैसे रहना चाहता हूँ वैसा रहूंगा, होगा? ऐसा नहीं होगा. इसलिए उस भक्त संघ को जब चूज किया, उसमें किस प्रकार आप बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, ये सब की जिम्मेदारी आपको लेना है. इन ए वे व्हाट? टू इंस्टिल द फेथ इन अदर्स, नॉट टू डिस्ट्रॉय द फेथ ऑफ अदर्स. श्रील प्रभुपाद इसलिए ना भक्त को एजुकेट किया है. प्रभुपाद ये नहीं कहा कि भौतिक दुनिया की चीज से दूर रहो, उन्होंने भौतिक दुनिया की दर्शाया. देखिए भौतिक दुनिया कैसे चलते हैं, माया कैसे प्रभाव दिखाते हैं. जैसे उस टाइम पे सिगरेट्स, जी सिगरेट पीने से, है ना, सिगरेट का जब नया मैन्युफैक्चर हुआ ना, तो उस समय हर जगह बिलबोर्ड्स था, एडवर्टाइजमेंट था. क्या था? जहाँ पे एक हीरो और हीरोइन, मैन और एक सुंदर लड़की एक वाटरफॉल्स के नीचे बैठे हैं, घूम रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं. स्विमिंग करके बाहर आके वो सिगरेट लेते. वो सिगरेट का नाम था फूल, KOL, फूल. उस फूल सिगरेट को लेते थे दोनों, फूक के, हाँ, स्मोक करके उनकी चेहरा के ऊपर, the hero on चेहरा ऊपर, and she becomes so, and the hair flows around the head. She was, oh, so cooling than the waterfalls. फिर वो लेडी भी क्या करते हैं, she will smoke and ना, then he becomes, his love for her increases. तो फूल ये बहुत फेमस था. एंड ये लव बर्ड जो भी है वो सब ने सिगरेट चालू कर दी, क्योंकि ये फूल पीने से आप बहुत कूल रहेंगे रिलेशनशिप्स. देखिए, एंड प्रॉपर ये देख रहे, कार में जा रहे, हर जगह फूल फूल, सिगरेट, बी कूल, स्मोक कूल एंड बी कूल. स्मोक KOL कूल एंड बी COL कूल. तो प्रॉपर देख रहे हैं एंड भक्त भी देख रहे हैं. प्रॉपर बोले कि कोई, how can one be cool by taking a fire inside? The smoking a fire inside, now they be cool. So Prabhupada, what he did not educated. He strengthened the devotees, understanding, intelligence by educating about the world around. And when in association
मैं और एक स्टोरी कह रहा हूँ, ये तो भक्त को कैसे दुनिया से डील करने के बारे में बताया। और एक सिचुएशन, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद went to one particular temple. He asked, अरे where is the temple president? वो कहाँ है? ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते आया, पर उस समय कमेटी बनाए कुछ लोग, बोले जीबीसी कमेटी है, और जीबीसी कमेटी आके बोले प्रभुपाद, we all are seniors here, devotees, we made a committee and we have done investigation on this particular president. इन्होंने है ना ऐसा वैसा सही से नहीं कर रहे हैं, उनकी मॉर्निंग प्रोग्राम ठीक नहीं है, उनका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, और लेक्चर भी देते नहीं है, ऐसा 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 करके, इसलिए हमने all of unanimously together as per your instruction GBC, follow GBC, we have made instruction to them, remove him, and we appointed a new devotee. See this devotee so strict in his sadhana, so strict in about ensuring everyone comes for the morning program and follows everything necessary. It is so disgusted that they made a committee inside within the temple. So Prabhupada said, he brought, called that devotee who will remove. The devotee came. He was very humble. He came. He said, he had done blunder, certainly. It was something which he was not good. He was not so determined in his personal practices. So Prabhupada said, dissolve this body. Dissolve kar diyo body. So they said dissolve ho gaya. Prabhupada said, your instructions got dissolved. So he removed that the new devotee appointed as president. And उन्होंने क्या किया? वो जो पुराना भक्त को रखा. And all were very disappointed. They were not angry at Prabhupada, but they were frustrated. So what is this? Prabhupada, हमने आपकी इस किस्म से हम लोग कर रहे थे, आप क्या कर दिया? बोले कि Prabhupada said he is dependable. ये भक्त है dependable. हाँ, वो प्रॉब्लम है उनका साधना में. हाँ, मैं जानता हूँ कि इनको थोड़ा कमी हो सकता है, but dependable. ये भक्त को सेवा दिया, trustworthy. So therefore, it's very important. Prabhupada teaching very important example that we should act. Because the way they acted, it has created dissensions in the temple. People are confused. अरे, ये भक्त मेरे से छोड़ा नहीं, थोड़ा इधर उधर है, और मेरे ऊपर वैसे एक्शन लेगा. People का faith गड़बड़ हो गया, डिस्टर्ब हो गया था. But ये भक्त थोड़ा इधर उधर उनकी कमी है, साधना में हमारे को नहीं आते हैं, ऐसा सिचुएशन है. But ये अपने जिम्मेदार डिपेंडेबल है. ये बंदा कुछ बोला करने के लिए तो करेंगे, वो बीच में छोड़ के भागने वाला नहीं है. कुछ कष्ट आएगा तो बात करेगा, और जितना संभव उतना करेगा. So this is very important that we choose an association where we should take a responsibility of acting in a way, behaving in a way that instills the faith. Very important. We not only protect our faith, but also we should take responsibility of protecting others' faith. Family faith. आप भक्त बन रहे हैं, बट आपके व्यवहार से आपके माँ बाप, आपके परिवार में कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, मतलब आपकी जिम्मेदारी है उसको सुधारने का. इसका ये नहीं बोला कि मैं भक्त बन गया, ऐसा होता है नहीं. To make your mother cry, na, you will suffer in your life. But higher responsibility, if you make your mother cry, then you have to take responsibility of ensuring they are happy. ये जिम्मेदारी है. मैं ब्रह्मचारी होकर अभी करता हूँ, बिकॉज ब्रह्मचारी बना मतलब रुलाए कि नहीं. What do you think? बहुत हंसी हंसी मजाक के ठीक है, चलो चलो बहुत अच्छा करो, तो रोया. और रोया मतलब उसका मैं सफरिंग मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा. मैं जानता हूँ उसको सफरिंग भी मिला, पर अभी मेरी जिम्मेदारी बनते हमको समझाने का. टॉयलेट तो करेंगे, बट समझाने का, उनको वैल्यू देने का. My responsibility. See, by your behavior and by your action, if any normal person will become disturbed, you will take responsibility. You're very careful how you deal. There is a bigger responsibility than others. Then we should protect our faith and also act in a way that protects others' faith. So association is so critical. Yes, this is बहुत important. But कौन सा association है? तो वो शुद्ध भक्त का एसोसिएशन नहीं मिलता है. इधर से हम लोग नॉर्मल सादा सीधा लोग हैं सब, जो अपना लाइफ में. सो प्रॉपर टेल्स ना, प्योर डिवोटी का डेफिनेशन दो है.
जो शुद्ध भक्त है अपने मनसा वाचा कर्मणा कृष्ण की भक्ति करते हैं, स्मरण करते करते जीते इस प्रकार। बट और एक भक्त है जो उनका कंडीशनिंग है, कंटेमिनेशन है, हाँ हाँ, फिर भी वो क्या कर रहा है, अपना प्रयास जारी रखा भक्ति में आगे बढ़ने का, जो प्रिंसिपल to become a Mahatma, what you should do? You should follow in the footsteps of a Mahatma. Don't try to become great. आप बड़ा बनने का मत सोचिए, क्योंकि आप गिर जाएगा नीचे। बट बड़े को सेवा करिए, तो बड़ों को सेवा करते हुए आप बड़ा हो जाएंगे, बड़ा बन गया आप ऑलरेडी। तो serve the great, then you become the great. Don't try to be great. Serve the great. तो इसलिए जब भक्त के संग में जब रहेंगे, शायद सब लोग इस प्रकार के हैं, वो लोग ग्रेट नहीं है, बट वो लोग क्या कर रहे हैं, उस संग में क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। You should able to value the association where you are kept right now. You are not choose to come here, my dear Prabhus. It's not that मैं न्यूटन में चूज करके इधर आके मैं रह रहा हूँ, हाँ, कोई नहीं कह सकता ये चीज। ये it is by the will of Krishna to protect your faith. We should be happy in whatever association, and then we should act in a way that will instill the faith in others, not act in a way. Therefore, we have to take the tapasya. What tapasya? Live in that association. What is the tapasya? Take the responsibility of relationships you have with devotees, family. As an example of the family, man and woman when they marry, same thing comes. ये नहीं कि बहुत अच्छा होगा, मुझे हर दिन श्रवण कीर्तन होगा, हरि बोल, बहुत आनंद से बात करेंगे, ये नहीं होगा। जिम्मेदारी मतलब कि आपको ऐसा बिहेव करना है। कब झगड़ा हो गया, होता है, रहने से होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, बट आप क्या उस प्रकार जिम्मेदारी लेकर उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इज इट? You have to nourish your faith, protect that faith. Second, to act in a way that pleases Krishna and with the intention to please Krishna. And for that, the third responsible step we have to take is choose that association. And then Dasha Prabhupada educated devotees how to know. We should also educate ourselves. And then the fourth comes is, in that association, you act in a way. Not only you protect our faith, we should also ensure fair behavior. See, ऐसा भक्त क्या करेगा ना, then he will not be a mediocre. Mediocre मतलब what you call it is you call a seasonal devotee. Seasonal. हाँ? Fair weather devotee. Fair weather. Weather बहुत अच्छा है, बट मैं बहुत अच्छा हूँ। weather ठीक नहीं, मैं अच्छा नहीं। सीजन के ऊपर है। बारिश हो रही है, ज्यादा ठंडा अच्छा नहीं, ज्यादा गर्मी अच्छा नहीं। कभी होते जब क्या करना है, take responsibility of acting or rectifying the clarifying situation. And then comes the most important next responsibility is taking responsibility means take the responsible services with humility. नम्रता के साथ देना है। Prabhupada mentioned the advancement of a devotee depends on how much responsibility he is taking. Advancement of devotee depends on how much responsibility. Don't burden the shoulder of your guru. Prabhupada has taken so many burdens on his shoulder. हमको क्या करना है, हमें बर्डन नहीं बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? We should shoulder the burden. You understand the difference? Don't become a burden on the shoulder of your guru. Rather, you shoulder. कंधा में लाओ, बोला ना, कंधा दो,
थोड़ा बटन मेरे ऊपर दो, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी and with the humility. Yes, I am being protected, I am safeguarded, I am given a wonderful association, so let me take some responsibility. Yeah, it's responsibility not about the quantity of service. Uh, the responsibility not about the quantity of services. If need, I will take quantity, but also with attitude with which I am taking responsibility, with attitude with which I am doing services. The success of a service is not in सर्विस। तो जी मैं सर्विस बढ़िया किया, मतलब सर्विस बढ़िया होने से आपकी बढ़िया नहीं हुआ, वो सर्विस में किस प्रकार की सेवा भाव आप रख के गया ना, आपकी सक्सेस उसके ऊपर डिपेंड होगा। अपना एटीट्यूड सही मेंटेन किया उसमें, ये नहीं कि मैं सेवा लिया मतलब कोई नहीं मेरे सामने नहीं आएगा, कोई आएगा तो उड़ा दूंगा, तो मेरा सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं कर रहा हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। वो एटीट्यूड डिफरेंस है ना, एटीट्यूड को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। फिर मैं कहता हूँ सेवा भाव रखो, नहीं तो भाव कहेगा बहुत। हाँ? भाव कहेगा बड़ा होने पर, सेवा भाव नहीं तो सेवा क्या करेगा, भाव का दिलाएगा, भाव का क्या बड़ा बेड़े। सेवा भाव रहेगा ना तो जी आपकी लिमिट नहीं होगा कितना सर्विस आप दे सकते, आप उसको प्लानिंग भी नहीं कर सकते। प्लानिंग करके सेवा मत लीजिए my dear colleagues. I plan to take the service, don't go like that. Maintain a good attitude, take responsibility of maintaining a service attitude, then you see services come up and you become trustworthy, you become dependable devotee. अरे ये बंदा थोड़े जगह करते हैं, प्रॉब्लम नहीं, क्यों देंगे तो पीछे फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं, कभी देने के बाद सोचना पड़ता है करेगा क्या, क्या करेगा, उसके ऊपर फीलिंग होता है, बोला कि करेंगे क्या प्रभु बताइए क्या, बोला तो ये करो, तो वो क्या जिम्मेदारी हुआ। You act in a way, you take service in a way that people feel confident, people feel relaxed, ये बंदा करेगा भी। So we should take responsibility with that humility. उस responsibility आप कभी नहीं सोचना कि मैं कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचना है कि मैं मेरा इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलता है। ये अपॉर्चुनिटी है, सेवा मिला मतलब एक अपॉर्चुनिटी हरे कृष्ण भक्ति को और इंटेंसिफाई करने का। सेवा करने से वो साक्षात्कार आएगा तो साधना का, वो अपॉर्चुनिटी गुरु और वैष्णव ने मेरे को दिया है, करने दो मेरे को पता नहीं कैसे करूंगा, मेरे को पता नहीं कि स्किल्स क्या चाहिए, इसके लिए सीखूंगा, चाहिए तो होगा तो करूंगा इसके हिसाब से। बट ये मौका है जहाँ पे मैं कृष्ण को प्रति दिखा सकता हूँ, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कृष्ण को मैंने गुरु के लिए सेवा लिया है। वैकुंठ के आप बोलोगे क्या प्रभुपाद के लिए मैं सेवा लिया है, किया उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वो आएगा, प्रॉब्लम आया उन्होंने क्या किया, वो आएगा। सो ये सब आपका लिस्ट में देख जाएंगे, उसमें ये नहीं पूछेगा कितना आप अकम्प्लिशमेंट्स किया है, वो बात that is a part of your, this is the last, take serious responsibility. So to conclude, we should have an association where we are taking responsibilities of our behavior, responsibility of our humility, humility, the humble attitude which are maintaining our service attitude, responsibility of words and interaction within the devotee, and responsibility of protecting our own faith by doing activities which pleases Krishna, favorable to Krishna consciousness, to please Krishna. That means basically sadhana or Shravanam, Kirtanam, everything. You should take responsibility. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Srimad Bhagavatam की, श्री चैतन्य चरितामृत की। So I am concluding the meeting here, Hare Krishna.